Good evening and welcome to Left, Right and Centre. I'm Ankita Mukherjee. As the Aam Aadmi Party begins its preparations in earnest for the 2014 polls, we debate, does the party actually stand a serious chance outside Delhi as it prepares to go national? Also on the day, the High Court rules that the Uttar Pradesh government cannot withdraw terror cases, a major poll promise of the Samajwadi Party, without the centre's consent. We ask, has the court effectively put the brakes on appeasement politics? That's coming up in a moment from now. But for the moment, let's go across to where the BJP's chief ministerial candidate Harsh Vardhan is about to speak. Remember, he's just met with Delhi's Lieutenant Governor Najib Jung, who had called him for discussions on government formation in Delhi. The BJP has already made it clear that it does not have the numbers and does not wish to stay clear. The BJP is the single largest party in Delhi, but it has 31 seats of its own and one of an ally. That number, 32, means it's still 4 short of that 36 figure that it needs in the 70-member Delhi Assembly. साथियों, मुझे आज उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली विधानसभा के अभी हुए चुनावों में दिल्ली की जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट के आधार पर सबसे बड़े दल के नेता होने के नाते आज उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था कि दिल्ली में सरकार बनाने की प्रक्रिया के संबंध में मैं उनसे आकर चर्चा करूं। मैं अभी उपराज्यपाल महोदय से मिलकर विस्तार से चर्चा करके आया हूं। आज की परिस्थिति के बारे में मैंने उनके लिखित पत्र के जवाब में उन्हें एक पत्र भी दिया है, जिसकी कॉपी अभी आप सबको दे दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा के 2013 के हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अकाली दल को दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं, 32 सीटें। और सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए दिल्ली की जनता का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझमें और मेरे साथी पार्टी के कार्यकर्ताओं में दिखाया है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा में मेजॉरिटी होने के लिए 36 सीटें आवश्यक हैं और उस मेजॉरिटी अंक से 4 सीटें हम लोग कम हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये विश्वास रहा है कि राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, इन सब चीजों के माध्यम से राजनीति की जानी चाहिए। हमारे लिए राजनीति सत्ता ये ध्येय नहीं है, ये सेवा का माध्यम है।
और यह जानते हुए कि दिल्ली की जनता ने हमें सबसे बेहतर मैंडेट दिया है और उस मैंडेट के नाते उन्होंने 15 वर्ष से दिल्ली में चल रही कांग्रेस की सरकार को एक प्रकार से इस बात की सजा दी है कि वो शायद जनता के हितों की ईमानदारी से रक्षा नहीं कर पाई और इस नाते उनकी सीटें दिल्ली में केवल 8 रह गईं और उनकी मुखिया भी चुनाव हार गई। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से उनका धन्यवाद करते हुए इस निमंत्रण के लिए ये कहा है कि क्योंकि हमारी दिल्ली विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए दिल्ली की जनता के स्पष्ट मैंडेट के अभाव में हम दिल्ली की जनता की सेवा करते रहेंगे, सत्ता के बगैर भी सेवा करते रहेंगे और हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम विपक्ष में बैठकर दिल्ली की जनता की सेवा करें। मैं इस अवसर पर दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने निश्चित रूप से जनता की बेहतरी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत व्यवहारिक और बहुत अध्ययन करने के बाद बहुत सारे सपने संजोए थे। हमें जब भी कभी दिल्ली की जनता का स्पष्ट मैंडेट मिलेगा, हम उन सपनों के अनुकूल दिल्ली की जनता की बेहतरी के लिए और दिल्ली शहर को देश की ऐसी राजधानी बनाने के लिए जिस पर खाली दिल्ली वासियों को ही गर्व ना हो, देशवासियों को भी गर्व अपनी राजधानी पर हो, हम उसके लिए बराबर प्रयासरत रहेंगे। मैंने यह सब कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से विनम्र निवेदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए उनको कहा है कि उनके निमंत्रण के बावजूद हम आज स्पष्ट मेजॉरिटी अपने पास न होने के कारण उनके सरकार बनाने के न्योते को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन प्रशासन को हम जिस भी स्थान पर हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए और जनता के हितों की रक्षा के लिए हम अपना पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। अभी जो मैंने पत्र उपराज्यपाल महोदय को दिया है उसकी कॉपीज आपको मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि उसके बाद आपके डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता आपका ये फैसला दिल्ली को दूसरे पुनः चुनाव की ओर लेके जा रहा है? आप ऐसा समझ लीजिए कि उपराज्यपाल महोदय ने हमें कहा है और मैं समझता हूं कि उनके पास राष्ट्रपति महोदय का पत्र भी है, इंस्ट्रक्शन भी है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो भी सरकार के अंदर मुखिया बने उसको विधानसभा में अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करनी है। अगर मुझे पता है कि मेरी विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है और मुझे ये भी पता है कि मेरी पार्टी का किसी भी रूप में दूसरी पार्टियों में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करना, खरीद फरोख्त करना या किसी भी प्रकार से दूसरी पार्टियों को डिस्टर्ब करना अपनी तरफ से, यह हमारी नीति और हमारे संस्कार का अंग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे सामने कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैं दिल्ली की जनता से भी इस बात के लिए क्षमा याचना चाहता हूं कि उनके सबसे बड़ी पार्टी के द्वारा दिए गए मैंडेट के बावजूद
हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। पुनः चुनाव के लिए तैयार है बीजेपी? अगर आपको पार्टी को अगर न्योता मिलता है तो आप समर्थन देंगे? देखिए, हमारी नीति हमने स्पष्ट कर दी है। कोई भी दूसरी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाना चाहती है, अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करना चाहती है, करे। कोई भी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाकर दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम करेगी तो निश्चित रूप से हम हर उस प्रक्रिया को सहयोग करेंगे जो दिल्ली की जनता के हित में होगी। डॉक्टर साहब अभी नहीं, डॉक्टर साहब समर्थन या रिपोर्ट आम आदमी पार्टी को कांग्रेस मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। देखिए, पक्ष का सवाल नहीं है, आपके सामने सारी स्थिति स्पष्ट है। और अगर परिस्थितियां हमारे को दूसरे चुनाव की तरफ ले जा रही हैं, उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप समर्थन देंगे? आम आदमी को समर्थन देंगे आप? देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि ना वो किसी का समर्थन लेने के इच्छुक है, ना किसी को समर्थन देने के इच्छुक है। नहीं, हमने आपको कह दिया ना कि हम हर तरह का सहयोग करेंगे दिल्ली की जनता के हित में। हमारा कोई इसके अलावा Harshvardhan of the BJP saying that, well, what we knew all along really, that the BJP insists it will sit in opposition as it does not have the numbers to form the government, but also making some interesting points about how this was the time for honest and clean and transparent governance as well, and for that kind of space in politics. Well, to reflect upon all of that, and indeed also the subject that we were debating tonight, the Aam Aadmi's national ambitions. Now joining us on this show, Dilip Pandey of the Aam Aadmi Party. We're also being joined by Dr. Abhishek Manu Singhvi, national spokesperson of the Congress Party, also Rajya Sabha MP, Siddharth Nath Singh of the BJP, Aarti Jairath, senior journalist, also with us in the studio tonight. But let me begin with the BJP first. Siddharth Nath Singh, the rhetoric that we heard from Harshvardhan today, talking about clean and honest politics, about transparent politics, in a sense, the BJP's reluctance to manage numbers after the Delhi Assembly elections, has the Aam Aadmi Party changed the agenda already? No, well, I wouldn't really say that Aam Aadmi has changed the agenda, but it's a pure and very simple. It's it's a number game. Sometimes we form a coalition government when there are certain allies who have number and they are willingly they would like to come along, whether it has been BJP or Congress. But in this case, the numbers are such, they are stacked in such a fashion that we cannot, as BJP, we cannot cross 33, and it is the best which can be done, because we feel the Congress and Samaj. So are you putting just a good face on an impossible situation then? Is that what you're saying? Well, from our side it is, but there is an option which Congress has already given to Aam Aadmi, that their MLAs are willing to support. So if 28 and 8 can be added, it becomes 36, and we can be a constructive opposition. And there are similarities between Aam Aadmi and Congress vis-a-vis towards their approach to BJP on secularism, on Narendra Modi, on many issues. Okay, of I think those are all interesting points and worth taking up with the Aam Aadmi Party member here. Dilip Pandey, won't a repoll in Delhi actually affect your plans to go national? You are at the end of the day a fledgling political party. You have limited resources, limited manpower. Is this decision not going to cost you in the long run? First, I would like to answer Mr. Siddharth. He said there is a possibility he is seeing wherein Congress MLAs have offered support to Aam Aadmi Party to form a coalition government. I think I look at it a very different way. I mean, I see a different picture here. Bharatiya Janata Party and Congress Party, these are two of the oldest political parties who are in touch with each other since last at least 30-35 years. And there are a lot of similarity between these two political parties,
the way they fight the election, the way they conduct the things. So, and at certain stages, like if you look at the BCCI, I mean, they are very much hand in glove. They are working very, very much together. In Jilla Parishad in Maharashtra, if you look at it, on Jilla Parishad level, they are also working very closely together. So I think there's a possibility. Why doesn't Congress and BJP form a coalition government? Because the way the votes that we have gained, only the Aam Aadmi Party seems to think that is possible. Leaving that aside, you didn't respond to my question. Will this not affect your national plans? Because after all, you're opening up two different battlefronts now. See, it was always the question that what we are going to do in Delhi, which will decide our fate in national politics. One thing. So that has already been set quite well in Delhi, that the people of Delhi are actually, and not just people of Delhi, but all over India, that what we do the mistake when we look at voters not as a human being. It's the same everywhere, whether it's assembly elections or general elections. So it has been proved in Delhi that an honest effort will be welcomed for sure. That has been proven in Delhi now, and that makes also sure that if our next step is getting into general elections, we are damn sure that we are going to get the things much better the way we have performed in Delhi. So there's no doubt about it that when it comes to general elections, because it's always been, when it comes to BJP and Congress, it's always been a question of politics of substitution. This is the first time when in Delhi, the people are looking at a true alternative. Okay, politics of substitution, and here we have an alternative. Dr. Singhvi, after the Delhi experience, is the Congress at all worried that its core support base, or at least some of it, could shift to the Aam Aadmi Party, at least in other states where there is also a similar bipolar contest? Let's just cut out some of the hypocrisy and let's cut to the chase for a moment. And we have to be clear, first and foremost, if you are looking to blame anyone to host another election upon Delhi, to have resources expended, to have time and energy expended, then obviously it has to be firstly the BJP and secondly the Aam Aadmi. It was incumbent and obligatory on the single largest party to try and make and form a government. It is quite clear if you cut through all this static and hypocrisy that they are unwilling and unable to do so, and they are not even making an effort. So therefore the blame must start there. Secondly, the blame must perhaps continue down the line to the AAP, which is also trying to make no effort. You can't really look at the Congress because the Congress doesn't have the numbers, it doesn't have the mandate. So really speaking, there can be no fault finding on this score from the Congress. As far as the future is concerned, I can only say this for the Congress. The Congress takes this very deeply, it absorbs all the lessons, and after all, we have had here a Congress government for 15 years. Even the worst critics of Sheila Dikshit government acknowledge that a lot of solid good things have been done. And we will work on how to communicate them again back to the electorate, and we'll come back far stronger. But beyond that, it is, if at all, post-election, a complete failure of the BJP and the AAP to try and prevent a vacuum, to try and do something for the government of Delhi, for the people of Delhi, and to prevent a huge amount of wasteful resources. But Dr. Singhvi, looking beyond Delhi and in a sense, nationally, is the AAP now occupying a vacuum that the Congress, in fact, has created? Particularly, will it be looking at vacuums in other states like Orissa, like Gujarat? Look, I must give kudos to the AAP for having done so remarkably well in the first election. I don't think you can grudge them in any manner a remarkable, unprecedented performance. But equally, I think you have to say that the jury is out on a non-Delhi All India contest. Remember two things. One, they are a completely untested group outside of Delhi, even in their campaigns, even in their resonance, even in their footprint. Secondly, in Delhi there is a very interesting statistic which I think may have gone unnoticed. In 11 or 12 major semi-rural areas, I mean Delhi is not rural, but there are urban parts which are on the outskirts, outlying areas of Delhi. In all those 11 areas, the AAP has lost completely. So their resonance and support in the rural areas or the semi-rural areas of India, even near Delhi, is highly suspect. And therefore, both in the urban centers outside Delhi and certainly all over rural India, I am not saying that they can't do it, but I think the jury must be out on that, and let us see what happens.